Hello and welcome back to the new class. And this class will discuss that 2016 question. So without wasting much time, let's get started. All right. So the first question of the day. Okay, fine. Yeah. Try this question. Uh, Small question. You can see. Try it out. All right. So let's start this question. So in this particular question, we have f of 1 equals to 1 and we have to find f of 31. So we have to find the f2 and see what is the pattern going on. So when I plug x equal to 2, I can say it is 4 plus f1. This is 5. f1 equals to 1. When I put x equal to 3, I am getting 6 plus f2, which is 6 plus 5, 11. When I find f4, it is what? 4 and 2 is 8 plus f of 4, f of 3. This is 11 plus 8, 19. So what is the pattern going on? f1 equals to 1. Then there is a 5. Then there is 11. There is 19. It is going on like this. So we have to find the f of 31. So I can say here that how much is the gap? What is the pattern going on? 4, then there is 6, then there is 8. So we have to keep on finding the pattern and do this thing. Now tell me, to find the last number, how many terms should I added? So I can say there are 31 terms in this particular area. There are 31 terms in this particular area. But this sequence is repeated 30 times only. 30 terms. Because between two terms, there is a single term. Between two terms, there is a single term. So 31 are on the top, 30 are on the bottom. So 30 terms are there. We can find the sum of these 30 terms. Because I have to add that sum in 1, then I will find this f of 31. For example, 1 is added to 4, it will give you 5. 1 is added to 10, it will give you 11. 1 is added to this 18, it will give you 19. So we have to add this 1, the first term of the main sequence, in the required sum. So the sum of this sequence would be what? You can find the sum by arithmetic formula. It is n by 2. So 30 terms are there. N by 2, 2a plus n minus 1, 30 minus 1 into d. So this will give us 30. I just cancel out this 2. It is 4 plus
62. 3 into 6, 1860. So that's 32 into 6. Okay. So the answer would be what? I hope this is clear. Okay, try this question. Based on profit and loss, try it out. I'll set the timer. Calculation mistake? आप are you saying for yourself? Yes, Shubham, calculation mistake. Are you saying to me or to yourself? Let me check. 30 times 2, it is n by 2. This is correct. This is correct. A plus B. I cancel out 2. Okay. This would be 29. 33 and 990. So 1 plus 990, 991. Okay. What was the question? Yeah, here it is. Please continue. Yeah, got that. Got that. Thank you.
जेड का हाँ मैंने फॉर्म तो भरा है। मेरा सेंटर काफ़ी दूर आ गया, तो मैं अब सोचूंगा कि जाऊंगा कि नहीं। ओके, टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। That place I have gone many times. It's my mom's sides. Okay, so she's Rani brought more apples than oranges. She sells apples at 23 a piece and makes 15% profit. So apples are there. Selling price is given to us 23 rupees. Profit of 15%. We can find the cost price. So I can say it is 23 divided by 115%. Right? 23 is representing 115%. So the 100% is cost price. And it would be how much? It would be 2300. 100 is 20 times. Yes, it is 2 and then yeah. So cost price is 20. It is for apples, and then for oranges it is 10 rupees 25%. So 10 divided by 125%. It is 5 by 4. 8 rupees. 17.4 ठीक है हाँ. Total selling price given है 653. We can say A apples खरीदे और B oranges मान लेते हैं, and this is equal to 653. Let's satisfy which option. और A और B के वैल्यूज निकालने, और हमें यहाँ पता है एप्पल्स आर मोर देन ऑरेंजेस. एप्पल इज ग्रेटर देन ऑरेंजेस in terms of quantity. So hit and try approach. So when I do, B का वैल्यू मिल सकता है क्या मुझे? अगर मैं A की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे 1, तो ये 23 कम हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा लास्ट में. हाँ, ज़्यादा ठीक रहेगा. 630, तो 63 आ जाएगा इसका वैल्यू. अब B का वैल्यू निकालने के लिए A का कोफिशिएंट देखो, 23 से कम कर दो तो ये 40, एंड दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज बाय 10. सॉरी, डिक्रीज. ये कम किया है तो ये ज़्यादा हो जाएगा 10 से. ये 10 से ज़्यादा हो जाएगा 21. ये 23 से कम हो जाएगा 17. ये 23 से आगे. सो दिस इज द सुटेबल केस फॉर अस जहाँ पे एप्पल ज़्यादा है ऑरेंजेस से. तो ये वाला क्वांटिटी हम लेंगे यहाँ पे. तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस? एक एप्पल का प्राइस है 20 रुपये, और कितने खरीदे? 21 एप्पल. इज इट गेटिंग क्लियर? 21 एप्पल खरीदे तो ये 420 का हो जाएगा. और यहाँ पे 8 रुपये का ऑरेंज है, एक 17 खरीदे. सो 126, 136. So total cost price is 556. So profit or loss? We have a profit here. तो 556 का खरीदा, 653 का बेचा. हाउ मच इज इट? 44 यहाँ से, 44 प्लस 53, 44 प्लस 53, 97 विद रिस्पेक्ट टू 556. तो 17.4% अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है. ठीक है, फाइन. ऑल राइट, सो ट्राई दिस क्वेश्चन नाउ.
एनी आइडिया? 130, ठीक है, थोड़ा जुगाड़ करके आंसर आ जाएगा ठीक है, so 2061 in the base B. We have discussed these number system topics in the previous classes also. So what we have to do, we have to multiply each digit with the power of B. So 1 is multiplied by power of 0, 6 is multiplied by power of 1, like this. So it is basically 2B cube plus 6B plus 1. Similarly, I'll do the same for the another base. Sorry, for another number, it will give me 6B square plus 1. So when I add these two numbers, I'm getting 2B cube plus 6B square plus 6B plus 2. Okay. Now this is given to us, it is equal to 432. It's a complex equation because we have a cubic equation, and it, like, you can just compare the sum of roots, the product of roots taken at 2 at a time, and then do a guesswork, solve it. But to save some time, do a hit and try approach. Best is that. So if I divide it by 2, I'm getting this equation. It is 430 divided by 2, 430 divided by 2, 215. So I can see it is something, this equation. Now I am doing a hit and try approach. It is not that I have solved this equation. To save the time, I did this question by hit and try approach, and I get B equal to 5. When I plug the value, I tried to plug it value because it is near to, see, this is a cubic cube. So 5 cube is 125. 6 cube will not work. 5 cube is more efficient here. And each digit, when added, there are 3 digits. Each of them will end with 5. So the last result will also end with 5. So it's a guesswork again. B equal to 5. We have to find 10101 B. So this would be equal to B cube plus B. When I plug B equal to 5 here, it is 125 plus 5, 130. Totally a guesswork, and do not skip such type of equation. Do a guesswork in the main exam also. Do not leave. Okay. So sometimes jugad. See, this is totally a jugad. Okay, invest one more minute for this question if you have solved it. Moving to the next. Okay, yeah. Try this question. Any doubt, let me know in the previous questions.
All right, so let's start this one. Water tank has M inlet pipes and N outlet pipes. Inlet pipe can fill the tank in 8 hours. Outlet can empty in 12 hours. So inlet and outlet, 8 hours and 12 hours. LCM is 24, right? It is plus 3, it is minus 2. Plus for filling, O is for emptying. If all the pipes are left open simultaneously, it takes 6 hours to fill the empty tank. To fill the empty tanks, 6 घंटे लगेंगे. So what is the relation between M and N? So quantities, let's say M are there, N are there. So the effective would be what? 3 into M, 2 into N. So 3M minus 2M. And they are working for 6 hours. The total capacity is 24. C and D is correct answer. Yeah, C and D is correct. So 3M minus 2N is equal to 4. Now it is a guesswork again. Which option satisfies? You can plug the value. Otherwise, you can say if M equals to 2, N equals to 2. Is it satisfying? 6 minus 4, sorry, N equal to 1. 6 minus 2 equal to 4. To find the next value, I'll increase the value of M by the coefficient of N. It would be 2. It would become 4. It would be increased by 3. So it is 4. The ratio is 2 is to 1 here, but the ratio is 1 is to 1. Of course, when you add a certain quantity, the ratio changes. So ratio keep on changing here. So that is why the answer is C and D. Okay, do not, first of all, in XAT, always look at all of the options. Do not go blindfold. Okay, maybe you pick 2 is to 1, but see, there is a C and D option also. So check, maybe something you are missing at that point. So do not hurry in XAT exam. Revise your complete solution again for 1 minute and then mark. All right, moving to the next question. Shivam, is it getting clear? Okay, try this small question. Nine is fine. 9 is correct. All right.
For two positive integers a and b, if a plus b raised to the power a plus b is divisible by 500, then least possible value of a and b is how much? So 500 is made up of what? Let's factorize this thing. It is 100 into 5. It is 2 square into 5 cube. 125 into 4. So basically we have to find a number which is represented in this format. Something, let's suppose a plus b raised to the power a plus b. I can say it is, for instance, it is x raised to the power x. Something like this. The power is same like the base, right? So what can be the possible minimum possibility? That there is a perfect square, there is a perfect square already there, right? So the minimum possibility would be what here? That this number, we have to find that this number is divisible by 500. Like this number is dividing this number. So at least there should be a 3 power. But we can clearly see there is something 2 square, 5 square. So this number must be what? Something, if I make it 2 something power and 3, 5 something power. So it would be 10 something power. Because it is a multiplication of prime factors 2 and 5. So at least there would be a 10 in the base. So if there is a 10 in the base, we can say the minimum possibility must be 10 raised to the power 10. We have to anyhow multiply 2 and 5. Then it will make a 10. How many 10s are required? Basically, there are only 3 10s can be sufficient. If it is like x raised to the power y, then you can say 10 cube. Okay, 1000 is divisible by 500, which is sufficient for us. But the powers are same. That is why we have to do 10 raised to the power 10. So it means a plus b equal to 10. So what is the possibility, minimum possibility for a multiplied by b? You can say 1 and 9. This is the minimum possibility. So their multiplication is 9. Okay, do not mark 10. Read the question. Fine. So these are some PYQ questions, and it is possible that easy questions can be there. All right. Do a geometry question.
So you can follow this channel. She is an auxiliary Jamshedpur alumni. She will give you more insights on this exam. Okay, so let's, have you done this question? A square piece of paper is folded 3 times. Along its diagonal. So, 3 times it is folded. To get an isosceles triangle whose equal sides is given. So we basically, let's just fold it. So it is a, if it is a, it is also a, this is a root 2. The diagonal is a root 2 for us. So once I fold this thing along the diagonal, the next shape would be something like this. This would be the next shape after one fold. So this is a root 2 for us. That's a. Now I have to fold it along the diagonal only. Means this point will go there along the diagonal only. Along this axis, you can say. So the next fold would be something like this. This is a. That's now this is the half of the complete diagonal. It is a by root 2. So that's our a by root 2. And that would be also a by root 2. We know this thing. I just find this thing by Pythagoras. Sorry for the background. 400, yeah, it is correct. And then again one fold, I guess. 1, 2, 3. A square piece of paper is folded 3 times along its diagonal. So one time it is there, then 2 times, then one more time. So this would be along this thing. So that's a by 2 and a by 2, and that's a by root 2. You're getting this? This is getting unfolded along this axis. So this is an isosceles triangle that we get, and the side is 10 centimeter. We can say a by 2 is equal to 10 centimeter. So a equals to 20. So the initial area is a square, which is 400. So that's our answer. Okay, fine. Any doubt in any question, let me know in between. Okay, moving to the next. Okay, try this question.
All right, so let's start this question. So we have this ABC are integers and mod A is not equal to mod B, not equal to mod C. Now, what is the meaning of this thing? And they all lie in between -10 and 10. So if I take, let's suppose A equals to 10. Let's suppose I equal A 10 or -10. I can take anything. The mod will be same. So the mod of A will be 10. Not, it is like this thing. So I can say that B cannot be 10. B can be 9 or -9. It is possible. And in that particular case, C cannot be 9 or -9. C can be anything else. It it can be 8 minus 8, whatever. 7 minus 7. Similarly, B is not equal to C in that particular cases accordingly. So this is the meaning of the condition given to us. Now maximum value of ABC, like again we have to do an hit and try approach. ABC maximum value, this minus A plus B plus C. We have to maximize this complete thing. So this must be maximum and this must be minimum as possible because of a minus sign. So what is the maximum value that these ABC can achieve? So the maximum they can achieve is 10 into 9 into 8. Right? The maximum ABC can achieve maximum value is 10, 9, 8. And if I have taken this thing, 10 plus 9 plus 8, this will give me how much? 720 minus 727. Yeah, 693. This will give me this B option. But if I go some more in this thing, I have to make this product negative. Sorry, I have to make this product positive. So I can also do it like this. It is still 720. It is still 720. But in that case, this value would be what? It is still 720 and it is minus 11 plus 11. 720 plus 11, 731. So this is more convenient for us. This is a more maximum value. So I'm keeping the product same. I'm keeping the product same, positive. Now changing the values. Why I did -10 and -9? Because this is dominating here. If I have taken a pair of 10 and 8, the value will be less than 731. Of course. So 693 is the most common wrong answer, Shubham. Okay. You have to think it like this also. Because the product is still 720 in the positive sign, but the value is getting maximized. Okay, I hope this is clear. See some, find some another patterns too in those particular values. Do not just find the answer and click it. This is a trap. Okay, we have this question, this question. Did I write this question twice? Okay. Everything we have done. We are fine. Okay, one more geometry. Here it is. Try it out.
See, in the mocks you must have seen your strength and weakness. So जो section ज़्यादा अच्छा है उसमें ज़्यादा टाइम देना. अकॉर्डिंगली बेसिकली आप टाइम को पहले इक्वली डिवाइड कर दो और फिर आप देखो कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा समय ज़्यादा लेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट है क्वांट में, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय तो देना पड़ेगा इसमें एज कम्पेयर टू डीएम एंड वीआरसी. तो टेक इट अ रेशियो ऑफ लाइक जैसे फिर 3 सेक्शन है, आप 33% सबको दे दो, 33 तो इसमें कुछ आप मान लो 40% ऑफ द टाइम एंड देन द रिमेनिंग इन अदर 2 पार्ट्स 30 के. ठीक है, 4:3:3 कर लेते हैं, इस रेशियो में डिवाइड कर देना. नहीं, ए और सी साथ में, ए और सी इक्वल नहीं ले सकते ना, वही तो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको. ए एंड सी आर डिफरेंट थिंग्स, ए बी सी नॉट इक्वल टू वन अनदर है. हाँ ठीक है रशु. हाँ इतना ठीक है, 1.5 सवा घंटा ठीक है, सवा घंटा तो दे दो. 85 मिनट्स ठीक है. ठीक है, ट्राई दिस ज्योमेट्री. Alright, so let's start. The center of a circle inside a triangle is at a distance of 625 centimeters from each of the vertices. So let's draw a triangle. We have a triangle here. Center of the circle inside a triangle. Okay. If the diameter of the circle is given, circle is touching only 2 sides. Okay, perfect. Touching 2 sides only. So this is the center. The diameter is given. This is our radius. These are our radiuses. The radius is 175. So let's say it is A, B, C, O, P, Q. Okay, there is R also. And R is not on the circle. R is somewhat, let's see here. We know this fundamental, this is 90 degree. This is 90. Okay. The center of the circle inside triangle is at a distance of 625. Oh, sorry, my bad. Okay, radius is there. So we have the radius, we have this distance. OA is equal to OB equal to OC. Right, they are 625. And we have OP and OQ, these are the radiuses.
175. So I can easily find, I have OA, I have OQ, I can find AQ, and AQ would be taken by Pythagoras. 625 square minus 175 square. So 25 is common between, so I can say it is 25 into 25. It is 25 into 7. So AQ must be 25 into 24, which is 600. Pythagorean triplets I have done 600, 600. Symmetrical it is. Okay. Yeah, this is also 600. The same approach I will adopt because these are the, you can say, congruent triangles. So 600 and this is also 600. I got the complete length of this isosceles triangle. Now, I know this thing also that okay, this is fine. Now we have to find the area of the triangle. So we have to find the third side anyhow. And see, this, the center of the circle inside a triangle is at a distance of 6 to 5 from each of the vertices. Okay, yeah. See, this is the definition. The center of the circle is in center of the circle. Okay. So basically there are two circles. Imagine this thing like this. There is one more circle and this circle is like this. See, if this is a circumcircle, the circumcircle center would be O, is also O. In that particular case, we have a definition. Circumcircle is what? It is the perpendicular bisector of all the three sides. Means if I extend this thing, it is also a bisector. It is also 90 degree. It is not touching the circle. It is not radius and tangent. It is because of this red circle. The center of circle is equidistance. Means if this is a triangle and all the points are at equal distance from the vertices, then you will, when you draw a line, and because it is an isosceles triangle that we have proved, okay, it need not necessarily passes through the vertices. That is correct. It is in only scalene triangle, but because it is an isosceles triangle, then you can say it is somewhat like this. This is 90 degree also. So because of this thing, we can say this R is at 90 degree. Is this point clear? Circumcircle. सर टू सर्कल लेट किया है, लेट नहीं किया, सेकंड सर्कल, ये डेफिनेशन है एक तरीके से हमारे पास. अगर ये सेंटर है सर्कल का जो हर एक साइड से, हर एक वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक तरीके से ये सर्कम सर्कल का काम कर रहा है ना. अगर आप सोचो ये बड़ा सर्कल हमारे पास होता तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये रेडियस का काम कर रहा है. जैसे हमने कैपिटल आर जिसको बोला था सर्कम रेडियस, तो ये वो काम कर रहा है. सो वी कैन से यहाँ से जो हमारा वर्टेक्स जाएगा, इट इज एट परपेंडिकुलर बिकॉज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इट इज जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड ये R90 कैसे बना. इट इज नॉट रेडियस एंड टेंजेंट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेड सर्कल. अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे? वी हैव एवरीथिंग आई गेस. हमें यहाँ पे ये चाहिए, BR चाहिए. तो मेरे पास यहाँ पे ये 625 है. OR नहीं पता, तो OR का स्क्वायर कैसे निकालोगे? OR को x मान लेते हैं. आई हैव OR, और लेट्स सपोज OR इज x. ठीक है, OR को x मान लेता हूँ मैं. तो BR क्या आएगा फिर? x टर्म्स में आ जाएगा कुछ. तो BR वुड बी 625 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. और सेम BR को मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ. अभी तो मैंने BR निकाला इस ट्राइंगल में. आई एम फाइंडिंग BR इन द बिगर ट्राइंगल आल्सो.
इन दिस वन। तो यहाँ से जब मैं बी आर निकालूंगा वो कितना आएगा, वो आएगा बड़े ट्रायंगल में ये 90 है, 1200 हो जाएगा ये, माइनस ओ ए कितना है, ओ ए है 625। तो आई हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ बी आर इन टू ट्राइंगल्स। तो उसके हिसाब से मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया यहाँ पे। इस वाले स्टेप में डाउट हो तो बताओ। ठीक है, लेट्स मेक देम सेम। तो 625 माइनस एक्स स्क्वायर, 1200 का स्क्वायर माइनस 625 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 625 का स्क्वायर 625 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1500, सॉरी 1300, नहीं 1250। ये हो जाएगा डबल, अच्छा एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। 1250x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 625 का होल स्क्वायर माइनस 1200 स्क्वायर। 1250 से डिवाइड कर दें, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे 625 बचेगा केवल, और 1250 से जब यहाँ डिवाइड करोगे कितना रह जाएगा, 1200 डिवाइड बाय 1250, तो 50 से डिवाइड कर दें इसको। अच्छा अच्छा, 25 से 25 ये हो गया, नहीं 5 से ही जाएगा, 5 ये 24/25। हाँ, ये वैल्यू आ रहा है। बचेगा 25 से 25 बचेगा एक। ओके, 625 5 की पावर 6 कितना हो जाता है, 3135, तो 15675 आई गेस। 5 की पावर 5 यही होता है मेरे हिसाब से, आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक्स की कोई वैल्यू आ रही है 15651। आई एम जस्ट चेकिंग ऑन द कैलकुलेटर नाउ। कैलकुलेशन तो ठीक है ना, ये डबल हो जाएगा 1200 स्क्वायर। नेगेटिव आ रहा है, 625 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, और ये हो जाएगा 1200, ये ठीक है। ओह सॉरी, ये साइन गलत हो गया यहाँ पे, देयर इज अ माइनस, माइनस 2 ए भी हो जाएगा ना, तो ये 1250 इधर हो गया, इट इज़ माइनस, इट इज़ प्लस, मतलब इतना तो। हम्म, हाँ, सो वी आर हियर डिवाइडेड बाय 527 आ रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक करी है यहाँ पे। अच्छा स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं किया, ओके सॉरी, ये 1200 भी तो बचा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स इक्वल टू 25, ये हो गया 4 48, 576 का डबल, 4 48, हाँ
576 का डबल, 2 6 12, 2 7 14 15, 576, 1152, 12 5 7, ये 4 2 2, 527। एक्स की वैल्यू है 527। ओके, हाँ थैंक यू। अच्छा हाँ ठीक है थैंक यू। हाँ अब क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लेट जस्ट फाइंड इट। एक्स आ गया हमारे पास, तो ये टोटल हाइट आ गई मेरे पास। मैं बी आर निकाल सकता हूँ, बी आर निकाल लेते हैं। 527। ओके, तो बी आर इज लाइक दिस, ए पाइथागोरस थ्योरम। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी करने से फायदा है। आई एम जस्ट यूजिंग द कैलकुलेटर। 5625 स्क्वायर माइनस 527 स्क्वायर and square root of 112896. So it is 336. When you use the calculator, it is 336. So the area is half. The base is what? Base is 336 का डबल, दैट्स बेस। और हाइट कितनी है? हाइट है हमारे पास 625 प्लस एक्स। एक्स कितना है? 527। So let's just do it finally. We have 336 times. It is what? 1152. So 387072. Option B is the answer. Here we get. Okay. I hope approach is clear, and please use calculator in such questions. ठीक है, last question. Let's take a one more question. Here it is. Try it out.
ओके लेट्स सी, आई थिंक ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। वी ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मेकिंग देम सेम। लाइक हम चाहते हैं कि ये एफ एक्स बने कुछ एफ ऑफ 1 हो, एफ ऑफ 2 हो, एफ ऑफ 0 हो, वट एवर। वी ट्राई टू सॉल्व दैट दीज इनपुट्स आर इक्वल, बट वी गेट स्टक समहाउ। अब ये है इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ग्राफिकल अप्रोच ले सकते हो। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा, दिस इज y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। y की वैल्यू बहुत रैपिडली ग्रो करेगी एज कम्पेयर टू x, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द पैराबोला लाइक दिस। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट निकालने के लिए आप ग्राफ को थोड़ा इसको एग्जैक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, देन यू विल एबल टू फाइंड कि वो क्या वैल्यू होगी। जैसे 1 पे तो 1 आएगा और इधर 2 आएगा, पर तो अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो इट इज गिविंग मी 1, बट इट इज गिविंग मी 2 लाइक दिस। ओके, अब 2 रखता हूँ जब मैं यहाँ पे, तो 2 रखने पे ये देगा 8 और वो देगा कितना 5। तो ये दिख रहा है ग्राफ से मुझे, ये दे रहा है कुछ 5 और ये दे रहा है 8। तो मतलब जो हमारा ये इंटरसेप्टेड आंसर होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला। जो भी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ से जो निकल के आएगी वो 1 और 2 के बीच में होगी। तो मैं जुगाड़ लगा सकता हूँ कि मैं एक्स को फिर 1.5 रख के देखूँ एंड सो ऑन, बट इट्स अ लेंदी अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन। कर सकते हैं रेदर देन, इसका तरीका ऐसा होता है कि ऐसे केसेस में जब ये चीज़ ना मिले तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अलग अलग फंक्शन मान लो थोड़ी देर के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग से 0 रखो, जिससे एक्स मिलेगा प्लस माइनस 1, और एक्स क्यूब माइनस 2 को भी अलग से 0 मानो, जिससे एक्स मिलेगा, मतलब एक्स क्यूब मिलेगा 2, वट एवर। मेक देम इक्वल टू 0 independently. Okay, although it is like not digestible, we can't digest this thing easily, but still, तो by this information I can say the f of 0 जो हमारा पहला वाला पार्ट है यहाँ पे, if I plug x equal to 1 और -1 whatever, तो ये 1 दे रहा है, ये 7 दे रहा है, क्योंकि इवन पावर्स है मेरे पास, और ये वैल्यू आती है मेरे पास कुछ k1 - 6। Similarly, if I put x cube equal to 2 here, f of, तो x क्यूब को अगर मैं 2 रखता हूँ सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे एक्स क्यूब को 2 रख रहा हूँ मैं, तो एक्स की पावर 6 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4, 9 इंटू 2 18, और ये k2, तो ये हो जाएगा k2 - 14। एंड बिकॉज f0 है, थोड़ा सा मतलब ये अजीब सा है, बट k2 - k1 पूछा है, दैट वुड बी 8। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेंज था कि हम x की वैल्यू अगर निकाल लेते, स्टार्टिंग में मिल जाती तो अच्छा होता, कर सकते थे वो, बट नहीं मिलती ना अगर x की वैल्यू, तो इसको अलग अलग मान के अलग फंक्शन और फिर वैल्यू को प्लग करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आया तरीका समझ? ये मत सोचना कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए तो दूसरा 1 नहीं, 0 नहीं बन रहा। उसको अलग x मान लो, उसको अलग सा फंक्शन मान लो, दो अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, इधर कुछ x अलग निकला, इधर x कुछ अलग निकला, इट इज लाइक दैट। दोनों को इंटर रिलेट मत करना। इज इज क्लियर? एंड 1 2 3 4 5 6, टेक दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, टेक द स्क्रीनशॉट, एंड आई गेस वी हैव सॉल्व्ड। ये तो सेम क्वेश्चन था, हाँ सारे कर लिए, ठीक है। So this is it for today, and we'll try to solve 2017 questions tomorrow. Okay, same time, we'll see you. Any doubt, let me know. Bye bye.